So let's now continue with our chapter 7, lenses. Next topic which we are going to see, that is the defects of vision and their corrections. So some people cannot see things clearly due to the loss of the accommodation power of the lenses in their eyes. Because of defective refraction by the lenses, their vision becomes faint and the fuzzy. In general, there are the three types of the refraction defects, and which are that defects and how to correct that defects, that all we are going to see here. So, why these defects occurs? These defects occurs due to the loss of the accommodation power, as we have seen above. That what is the accommodation power? So here, the capacity of the lens to change its focal length as per the need is called its power of the accommodation. So, as this accommodation power gets loss due to the lenses adjustment in the eye, due to which this type of the defects occurs. First one is the nearsightedness myopia. In this case, the eye can see nearby objects clearly, but the distant objects appear indistinct. मतलब इस डिफेक्ट में क्या होता है कि आई को जो है वो नियर बाय जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन जो दूर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट आर नॉट क्लियरली विजिबल. दिस इज द डिफेक्ट which is observed due to the power of accommodation and the lenses adjustment, that this type of the defect is called as the nearsightedness or also myopia. This means that the far point of the eye is not at infinity but shifts closer to the eye. In nearsightedness, the image of a distant object forms in front of the retina. See figure 7.13. There are the two reasons for this defect. First, the curvature of the cornea and the eye lens increases. The muscles near the lens are cannot relax so that the converging power of the lens remains large. सो क्या रीजंस है ये जो डिफेक्ट हमें यहाँ पर मिलता है, दिस डिफेक्ट विच वी ऑब्जर्व हियर. तो क्या यहाँ पर रीजन है, व्हाट वाज द रीजन? सो यहाँ पर मेजरली दो टाइप ऑफ द रीजंस विच वी आर सीइंग. मतलब ये जो डिफेक्ट ऑकर होता है, सो जो कि मतलब जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है दैट आर क्लियरली विजिबल टू द ह्यूमन आई, बट जो दूर के ऑब्जेक्ट है दैट आर नॉट क्लियरली विजिबल. सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जो देखा था कि जो नियर पॉइंट यानी मिनिमम डिस्टेंस फॉर द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द नेचुरल ह्यूमन आई शुड बी 25 सेंटीमीटर. मतलब 25 सेंटीमीटर जो होगा डिस्टेंस नियर पॉइंट का, वो मतलब मिनिमम डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन प्रॉपर विजन के लिए वो नेसेसरी है. और जो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए है वो तो इन्फिनिटी डिस्टेंस है. बट यहाँ पर जो नियर साइटेडनेस मायोपिया में जो ऑब्जर्व होता है, सो दैट इज दैट कि जो दूर के ऑब्जेक्ट है यानी इन्फिनिटी जो डिस्टेंस है फॉर द फार साइटेड फॉर द मतलब फार ऑब्जेक्ट्स के लिए, सो दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है. ड्यू टू विच द इमेज जो है वो फॉर्म होनी चाहिए रेटिना के इस पर. सो देयर इज द शिफ्ट इन बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज. और ये जो होता है दैट आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द टू रीजंस due to which these defects occur. तो क्या है वो दो रीजन? सो पहला रीजन है द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस. जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मायोपिक आई में यहाँ पर 7.13 की फिगर जो हमने बोली है, सो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन सी क्लियरली. ये जो है ये डायग्राम क्लियर विजिबल ऑब्जेक्ट्स जो है वो नियर बाय जो मतलब प्रॉपर विजिबल होते हैं. लेकिन मायोपिक आई में क्या होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना के ऊपर परफेक्ट फॉर्म हो रही है. लेकिन मायोपिक आई के इस केस में दैट इमेज इज नॉट प्रॉपरली फॉर्मिंग ऑन द रेटिना. सो इमेज मतलब रेटिना के पहले ही यहाँ पर फॉर्म हो रही है, ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट्स ऑकर्स. और इसमें क्या होता है कि द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस. द मसल्स नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज. मतलब जो कर्वेचर होता है कॉर्निया का वो बढ़ जाता है और मसल्स क्या होते हैं
रिलैक्स नहीं होते, कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस मतलब जो होती है वो ज़्यादा ही बढ़ जाती है। सो ड्यू टू विच वो मतलब रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होने से पहले इमेज फॉर्म हो जाती है। ड्यू टू विच दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज द मायोपिया और नियर साइटेडनेस इज ऑकर्ड। और सेकेंड जो रीजन है, द आई बॉल इलोंगेट्स सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना इंक्रीजेस। और जो आई बॉल होता है तो वो इलोंगेट हो जाता है, ड्यू टू विच डिस्टेंस बिटवीन लेंस और रेटिना के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिस्टेंस बढ़ जाता है। और डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से दैट इमेज इज नॉट क्लियरली एबल टू फॉर्म ऑन द स्क्रीन दैट इज द रेटिना, ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट occurs. So this defect can be corrected by using spectacles with concave lens of the proper focal length. This lens diverges the incident rays, and these diverged rays can be converged by the lens in the eye to form the image on the retina. The focal length of the concave lens is negative, so a lens with the negative power is required for correcting nearsightedness. The power of the lens is different for different eyes depending on the magnitude of their nearsightedness. सो ये जो डिफेक्ट है वो क्लियर मतलब जो करेक्ट करने के लिए एक जो सॉल्यूशन है दैट वी आर यूजिंग हियर द डाइवर्जिंग लेंस दैट इज द कॉन्केव लेंस। सो ड्यू टू विच द जो रेज होगी वो जो लाइट रेज है वो डाइवर्ज हो जाएगी एंड द प्रॉपर इमेज विल बी obtained ऑन द रेटिना ड्यू टू so that the concave lenses are basically used to avoid such type of the defects or to correct such type of the defects। और जो हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव लेंस की, सो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दैट इज द निगेटिव। और नेगेटिव हो जाने की वजह से क्या होता है कि द फोकल सो अ लेंस विद द नेगेटिव पावर इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द नियर साइटेडनेस। द पावर ऑफ द लेंस इज डिफरेंट देयर नियर साइटेडनेस। और हर एक लेंस की जो पावर होगी, पावर इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोकल लेंथ एज वी हैव सीन हियर। सो जो फोकल लेंथ जो कॉनकेव लेंस की रिक्वायर्ड होगी, सो दैट विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट eye as depending on the magnitude of the near sightedness, so that the doctor suggests और जो spectacles में जो लेंस यूज की जाए और this defect that is myopia, so we are using here the concave lens. So this is the what the defect first which we have seen here. एक सेकेंड और एक डिफेक्ट है जो आता है दैट इज द फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। अगेन दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट विच इज ऑब्जर्व सिमिलर टू द मायोपिया, लेकिन यहाँ पर अलग है। इन दिस डिफेक्ट द ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। मतलब जो दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है दूर के ऑब्जेक्ट, सो दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन पास के जो ऑब्जेक्ट है दैट इज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट क्लियरली विजिबल टू द ह्यूमन आई। This means that the near point of the eye is no longer at 25 centimeter but shifts farther away। मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो नियर पॉइंट का जो डिस्टेंस है जो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज 25 सेंटीमीटर, वो शिफ्ट हो जाता है दूर, फार्दर अवे। ड्यू टू विच अगेन जो इमेज फॉर्म होनी चाहिए रेटिना के ऊपर, वो रेटिना के ऊपर न बिना फॉर्म होते हुए बिहाइंड द रेटिना द इमेज इज फॉर्म इन दिस टाइप ऑफ द फार साइटेडनेस और hypermetropia. So there are the basically the two reasons for the far sightedness, that the curvature of the cornea and the eye lens decreases so that the converging power of the lens becomes the less। और इसकी वजह से मतलब जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर की साइज कॉर्निया की, so that the distance decreases of that curvature, and due to which the converging power of the lens becomes less. Due to the flattening of the eyeball, the distance between the lens and the retina decreases, और लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। So here is the diagram that is far away objects can be clearly seen। अरे सो फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लियरली सीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लाइट रेज आ रही है दैट आर कन्वर्जिंग प्रॉपरली ऑन द रेटिना एंड द इमेज इज फॉर्म क्लियरली। लेकिन जो हाइपरमेट्रिक मेट्रोपिक आई की जो इमेज यहाँ पर डायग्राम दी गई है, सो एज वी कैन सी हियर क्लियरली दैट द मतलब जो रेज है, सो इमेज फॉर्म यहाँ पर हो रही है बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे तैयार हो रही है। सो ड्यू टू विच दैट द नियर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी एबल टू सीन क्लियरली as the point near point gets shifts, as it is not no longer the 25 centimeter which is the normal distance for the minimum of distinct vision।
सो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ पर यूज करते हैं एज अ कॉन्वर्जिंग लेंस. Convex lens is the converging lens, so due to which we are converging these light rays which are falling back at the behind the retina image जो फॉर्म हो रही है वो हमें रेटिना के ऊपर फॉर्म करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं. सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब मैं तो कहूँगा दैट दिस डिफेक्ट्स के ऊपर, मतलब जो ये दो डिफेक्ट्स है इन द आई, दैट दिस डिफेक्ट्स क्वेश्चन जो है इसके ऊपर ये डेफिनेटली फिक्स्ड बोर्ड एग्जाम्स और आपके कॉलेज स्कूल एग्जाम्स में भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है. सो कीप इन माइंड टू स्टडी and they may ask for the distinguishing between the myopia and hypermetropia, or distinguish between the nearsightedness or farsightedness, or give the write down the reasons for what are the reasons behind the formation of the occurrence or of the defect myopia and all. So farsightedness, as we have seen here, this defect can be corrected by using a convex lens with the proper focal length. और ये जो defect है वो हम clear कर सकते हैं, correct कर सकते हैं by using the convex lens with the proper focal length. This lens converges the incident rays before they reach the lens. The lens then converges them to form the image on the retina. और जो लेंस है यहाँ पर वो कन्वर्ज हम कर है फॉर्म वो रेटिना के ऊपर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. So the focal length of the convex lens is positive, thus the spectacles used to correct farsightedness has the positive power. The power of these lenses is different depending on the extent of the farsightedness. So again, that the power of the lens will be different as with the perspective that farsightedness की मतलब जो magnitude होगा human eye का जो distant objects को देख नहीं पा रहा है. So according to with that, that the power of the lens will be different as per the each human eye. सो नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ द डिफेक्ट दैट इज प्रेसबायोपिया. जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट that we should know what which are the defects which are occurred with the eye. So generally, the focusing power of the eye lens decrease. Eye lens lose their ability to change the focal length of the lens. Near point of the lens shifts farther from the eye. Because of this, old people cannot see the nearby objects clearly. Sometimes people suffer from the nearsightedness as well as farsightedness. In such a case, bifocal lenses are required to correct the defect. In such lenses, the upper part is a concave lens and the corrects nearsightedness, while the lower part is a convex lens which corrects the farsightedness. So, एक और type of the defect that is the presbyopia which is observed. This is generally observed in the people with the old age. ओल्ड एज जो पीपल होते हैं ओल्ड पीपल, सो दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट इज बेसिकली मेजरली मतलब ऑब्जर्व होता है उनके इसमें. तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, इस जो प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि जो मसल्स नियर द लेंस होते हैं वो मतलब फोकल लेंथ चेंज करने की जो एबिलिटी वो लूज हो जाती है उनकी. और जो नियर पॉइंट ऑफ द आई का जो नियर पॉइंट होता है दैट आल्सो शिफ्ट्स अवे. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों टाइप के जो डिफेक्ट है, नियर साइटेडनेस एज वेल एज द फार साइटेडनेस, बोथ आर ऑब्जर्व इन द केस ऑफ द प्रेसबायोपिया. मतलब मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी दोनों कंबाइन होके यहाँ पर प्रेसबायोपिया में ऑब्जर्व होते हैं. सो ये डिफेक्ट जो करेक्ट करने की जो मेथड है, सो जो बायफोकल लेंसेस होते हैं टू करेक्ट दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट्स. बायफोकल लेंस क्या है कि उनका जो अपर पार्ट का जो होगा वो लेंस का वो होगा कॉनकेव लेंस टू करेक्ट द नियर साइटेडनेस, और जो लोअर पार्ट जो होगा दैट विल बी द कॉन्वेक्स लेंस टू करेक्ट द फार साइटेडनेस. So these are the two different three types of the defects which we can able to observe in the human eye. Next is we are having the activity and all and uses of the convex lenses, compound microscope, telescope. So all this we will be seeing in the next part. If having any doubt up to now in this particular part of the three types of the defects which we have seen, मतलब जो नियर साइटेडनेस मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है एंड प्रेसबायोपिया है, इन केस में अगर आपको कुछ डाउट होगा, सो यू मे आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दैट. In the next part we will be trying to complete all this remaining, that is the apparent size of object, uses of concave lens, convex lens, compound microscope, telescope and all.
So if you like the content, then do like like, share, and subscribe this channel for the further more videos and all. And do share with your friends and all, so they can also get the benefit from these lectures. As board exam is nearby, as only 2 months are remaining, so we have to study hard with regards to that. अगर आपके कोई भी कुछ अगर डाउट होंगे इससे, इस चैप्टर से रिलेटेड, और जो पिछले के चैप्टर है जिसके वीडियोस चैनल पे अपलोड किए हैं, तो अगर उसमें कुछ भी अगर आपके डाउट होंगे, सो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और लाइव चैट में भी आप अ, पूछ सकते हैं. And try to solve the exercise questions if you are also facing the doubt in the exercise questions and all. कमेंट में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं. Then I will try to make a separate videos on the providing the solution with that particular. Yes, साहिल, अगर आपका कुछ डाउट होगा, so you may ask in now in the live chat, और else you can also, मतलब आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपका कुछ डाउट होगा. So आई एम ट्राइंग टू थिंक, मतलब मैं सोच रहा हूँ एक और मतलब सीरीज स्टार्ट करने की. सो वहाँ पर हम बेसिकली मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूँगा, एंड यू विल ट्राई टू, मतलब आप आंसर चैट में देने की उसकी कोशिश कीजिए. सो मतलब इसकी वजह से आप अपना जो है, मतलब कंप्लीट द फॉलोइंग, मैच द पेयर्स, और जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सो उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. एक बार अपना मतलब पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है, सो दैट विल बी कंप्लीटेड इन मोस्टली नवंबर में ख़त्म, मतलब दिसंबर में ख़त्म हो ही जाएगा. देन हम उस सीरीज को स्टार्ट कर देंगे. सो उसका बेनिफिट आपको होगा वहाँ पर.